can now, I basically hand over the. Who shall be discussing first? Yeah. So Raghvi shall be discussing first. Raghvi can take over on this. Hello. Good morning, everyone. Today we are having our topic India's implementation of NBFC. There are the following content which we will discuss today: introduction, its applicability, amendments, executive summary, detailed explanation, and structure of the India's financials. Now, first we will understand what do we mean by NBFC. So, NBFC is a company registered engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, and other marketable securities. NBFC is a company engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, and other marketable securities, but does not include any agricultural activity, industrial activity, purchase or sale of any goods other than securities, or providing any services and sale. It means कि NBFC जो principal activity होती है वो होती है loans and advances या acquisition of any shares of government or local authorities या other marketable securities. Now, IND AS will be applicable on NBFC only when they will fulfill these two situations. First, that all NBFCs whose equity or debt instruments are listed or in the process of listing on any stock exchange in India or outside. यानी कि जो भी हमारी NBFC है उनके कोई भी इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिस्टेड हो या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, either it is within India or outside India. Second situation is when NBFC is not a listed company but having a net worth of more than 250 crores or more. Now we will understand what do we mean by net worth. So net worth includes paid up share capital and all reserve and surplus after deducting our accumulated losses and deferred expenditure and miscellaneous expenditure. Our reserve and surplus includes capital reserve, which will be promoter contribution and government grants, but it will not include our revaluation reserve, which is created out of revaluation of assets. Now clarification, the criteria to be evaluated based on the standalone financial statement of the companies. First, we will understand what do we mean by standalone financial statement. स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो वो कंपनीज बनाती है जिनकी कोई भी होल्डिंग या सब्सिडरीज नहीं होती है. हम इन स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पर देखते हैं कि हमारे ऊपर इंडिया की एलिजिबिलिटी है या नहीं. If we specify the two situations in our cases, either one or either two, so we will have an application of IND AS on NBFC. Not only on standalone financial statement as well as a consolidated financial statement. यानी कि वो कंपनी जिनकी होल्डिंग या सब्सिडरी है वो भी IND AS एप्लीकेबिलिटी में आएगी. On applicability, company need to restate comparative figures also, as if IND AS was applicable from first day of preceding accounting period. जब हम हमारा IND AS का एप्लीकेबिलिटी करते हैं, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन करते हैं, तब हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हमारा करंट ईयर, हमारा प्रीसीडिंग ईयर और ओपनिंग ऑफ प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड देना होता है. Now voluntary adoption. NBFC shall apply IND AS only if it satisfies the above mentioned criteria and they shall not be allowed to voluntarily adopt IND AS. NBFC voluntarily IND AS adoption नहीं कर सकती है if they following and if they pass any to satisfy the criteria then only they can adopt IND AS. What were the two criteria? as कि वो उनके इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड होने चाहिए या फिर उनकी नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए.
However, NBFC can provide Ind AS compliant financial statement just for the purpose of incorporating it in the consolidated financial statement. As we discussed कि स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों पर ही एनबीएफसी इंड एस लगा सकती है। अगर इन केस हमारे ऊपर इंड एस नहीं लग रहा बट हमारी होल्डिंग या सब्सिडरी इंड एस फॉलो करती है तो जस्ट फॉर द कंप्लायंट पर्पस हम इंड एस हमारे कंपैरेटिव इंड एस के फॉर्मेट में बनाएंगे। NBFC which are not fulfilling any above mentioned criteria are required to follow accounting standard as per specified in Annex 10 of the Companies Rule 2006. So basically, अगर देखा जाए तो as compared to the other companies, in NBFCs cannot voluntarily adopt the financial statements, adopt the Ind AS. अगर अपन दूसरी companies की बात करें other than NBFCs, so they have the option to adopt the Ind AS voluntarily also, but to NBFC this option has not been given. But yes, of course, for the purpose of say if any holding company is the if any NBFC is the subsidiary of any other holding company, and that holding company is required to prepare the Ind AS financial statements. So in that case, that holding company will be, since that holding company is required to prepare the Ind AS financial statement, for the purpose of that holding company, the NBFC, which is the subsidiary company, can prepare its Ind AS financial statement for that limited purpose, but not for the purpose of its other stakeholders, not for the purpose of compliance as per Companies Act 2013. There they have to prepare their financial statement as per the accounting standards only, not as per the Indian accounting standards. Now we will carry on. What is Schedule 3? Schedule 3 consists of 3 divisions, Division 1, Division 2 and Division 3. Division 1 is applicable on the companies in which Ind AS is not applicable. Division 2 applicable to Ind AS compliant companies. Division 3 is applicable to Ind AS compliant NBFC. यानी कि Schedule 3 Division 3 जो है वो हमारे NBFCs पे अप्लाई होता है जिनके ऊपर Ind AS applicable होता है. Now amendments to Division 3 and Schedule 3 for the Companies Act 2013 for NBFCs. MCA issued a notification on 30th March 2016 announcing the Ind AS roadmap for NBFCs. Further, MCA notified amendments to Schedule 3 to the Act on October 11, 2018. MCA ने अपना नोटिफिकेशन इशू किया था 30th मार्च 2016 को और उसी में फर्दर नोटिफाई अमेंडमेंट किया था शेड्यूल 3 का ऑन 11 अक्टूबर 2018, जिसमें उन्होंने डिवीजन 3 शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर NBFCs that are required to comply with the company. Now, NBFC while preparing its first and subsequent Ind AS financial statement would apply Division 3 Schedule 3. अब NBFC जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी they have to follow Division 3 Schedule 3 if they are having the applicability of Ind AS. Now, before going to an amendment, we will discussion in detail what do we mean by Schedule 3 and Division 3. So, Schedule 3 basically provides us a format of the financial statement, and Division 3 provides us a format of NBFC for their financial statement as per Ind AS. Now, these are the components of the financial statement: balance sheet, statement of change in equity, statement of P&L, statement of cash flow, notes to financial statements, and comparative information. Now we will have a discussion on balance sheet. Division 3 provides a format of the balance sheet and set out some minimum requirements of disclosure on the face of balance sheet for the NBFC. जो हमारा Division 3 है वो हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता है कि हमें किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट को डिस्क्लोज शो करना है और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताता है. मींस इफ अकॉर्डिंग टू कंपनीज देयर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो उन्हें लगता है फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल यूजर इंपॉर्टेंट है वो उसे फेस पर डिस्क्लोज कर सकते हैं. Items presented in the balance sheet are to be classified as financial and non-financial. Just like a Division 2 जहाँ पर classification financial statement में balance sheet में current and non-current के basis पे होता है, वैसे ही Schedule 3 Division 3 में balance sheet का classification financial and non-financial के basis पे किया जाता है. Division 3 follow the order of liquidity for presenting line items on the face of financial statements. However, it provides flexibility to the companies in terms of changing the order of presentation of line item on the face of financial statement or change the order of line item within the schedule in order of liquidity if appropriate considering the operation performed by entity. जो Division 3 Schedule 3 हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं बैलेंस शीट का उसमें हमारे लाइन आइटम्स को ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में शो करता है. इट मींस कि जो हमारे हाईली ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के एसेट्स होते हैं उन्हें हम पहले शो करते हैं और उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे लाइन आइटम्स को हम शो करते हैं.
बट इट इज नॉट कंपलसरी कि हमें इसी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में शो करना है. इफ फॉर द कंपनीज अगर उन्हें कोई ऐसा एसेट या लाइन आइटम लगता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हाई ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है उनके अकॉर्डिंग, तो वो अपने ऑर्डर ऑफ लाइन आइटम को चेंज कर सकते हैं. So, Vaibhav, will you explain that what is the order of liquidity? So order of liquidity मतलब एकदम आसान भाषा में बोले तो अपने कैसे इन कैश करा सकते हैं ना असेट को, वो होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रेडिली कैश में अवेलेबल रहता है तो वो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होता है. बट हाउएवर अगर मैं पीपी की बात करूँ तो पीपी मेरा मतलब बेच के मेरे को टाइम लगेगा पैसा इन कैश करने में, तो एकदम लोएस्ट ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में आता है वो. तो जब भी अपन वो बनाते हैं अपना डिवीजन 3 शेड्यूल 3 का, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे पहले शो करते हैं और उसके रिड्यूसिंग ऑर्डर में पीपी वगैरह शो करते हैं. तो लिक्विडिटी मतलब ये होता है और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी वैसे शो करता है. So डिवीजन 3 के अंदर जो भी लाइन आइटम्स दिए हुए हैं वो सारे लाइन आइटम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी शो करते हैं. पहले उन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इनफैक्ट दैट इज ऑलरेडी लिक्विडेटेड एसेट्स, वो आपके पास में ऑलरेडी पड़ा है. उसके बाद में फिर वो फाइनेंशियल एसेट्स के कुछ चीजें हैं और फाइनेंशियल एसेट्स में भी सपोज कोई पर्टिकुलर आइटम जो है वो बाद में लिक्विडेट होके और अपने पास में आएगा तो वो उस ऑर्डर में बाद में आ रहा है. जो पहले लिक्विडेट हो सकता है वो पहले आ रहा है. एंड सिमिलरली इज द केस विद द लायबिलिटीज. सपोज आपका कोई कैश क्रेडिट है या कोई ओवरड्राफ्ट है तो वो पहले आएगा और कोई लॉन्ग टर्म लोन है तो वो बाद में आएगा. सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी in which we have to show the various line items in the balance sheet. Now, it requires an NBFC to disclose such information that enable users of the financial statements to evaluate the NBFC objective, policies and process of managing capital. हमारा मेन इंटेंशन बैलेंस शीट को डिस्क्लोज करने का, हमारे यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी इंफॉर्मेशन देना है जिससे हमारे यूजर जो है वो इवेल्युएट कर सके एनबीएफसी का मेन ऑब्जेक्टिव, इट्स पॉलिसीज एंड फर्दर प्लान. Now this is the format of the balance sheet. See, there is a classification of assets and liabilities on the basis of financial and non-financial. Now there is a liability and equity, where financial liabilities and non-financial liabilities. And in last, equity, which is consists of two parts: equity share capital and other equity. Now we will discuss about the statement of P&L, profit and loss. The division provides a format of the statement of P&L and sets out the minimum requirements of disclosure on the face of the statement of P&L. As I discussed above कि जो statement of P&L है, जो division 3 schedule 3 जो हमें format prescribe करता है P&L का, वो हमें minimum requirements बताता है जो हमें on the face of P&L disclose करनी है. बट अगर हमारी कंपनी को लगता है या एंटिटी को लगता है कि कोई और कुछ और भी है जो उनको एडिशनल रिक्वायरमेंट ऐड करना है, सो इट प्रोवाइड्स अस फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड ऑन. Item comprising revenue from operation and OCI, that is other comprehensive income, have to be disclosed on the face of the statement of profit and loss. P&L is consist of two parts: first revenue from operation and second is other comprehensive income. This is our format: particulars, note number, figure for the current reporting period, figure for the previous reporting period. Here you can see in revenue from operation, our first income is interest income. As we are talking about an NBFC, our main principal activities of lending. So our main source of revenue will be interest income. If we were talking about that, if it would be a first time adoption, so we would have given 3 columns here: figure for the current reporting period, figure for the previous reporting period, and opening of the previous reporting period. Now here, total profit and loss. Now, other comprehensive income. Other comprehensive income consists of a 2 parts: other comprehensive income realizable, reclassifiable, and other comprehensive income non-reclassifiable. Other comprehensive reclassifiable में वो इनकम आती है जो एट द एंड हमारे ट्रांसफर टू पीएनएल जाती है, मतलब जो पीएनएल से एडजस्ट होती है. और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉन रिक्लासिफिएबल में वो इनकम आती है जो हमारी पीएनएल से ट्रांसफर ना होकर डायरेक्टली इक्विटी से एडजस्ट होती है, और उनके ऊपर जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, डेफर्ड टैक्स या करंट टैक्स, वो उसी के हेड में उसी के साथ दिखाया जाता है. As we can see on the screen, other comprehensive income part A, item that will not be reclassified to P&L. It means OCI NR. Income tax relating to the item that will not be reclassified to the P&L. यानी कि जो OCI NR के ऊपर जो हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो हम इसी के साथ इसी के सब हेड में दिखाता है. अभी will you explain it further?
बेसिकली जो ओसीआई होता है, ओसीआई ये होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अपन दिखाना नहीं चाहते, जो अपनी बैलेंस शीट को मतलब पीएनएल को ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, इसलिए हम उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हम जो भी हमारा गेन या लॉस होता है, क्योंकि हम उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, तो हर बैलेंस शीट डेट पे या कट ऑफ डेट पे हम जो उसका गेन या लॉस होता है वो हम ओसीआई में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अनसर्टेन होता है और शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे हम उसको पीएनएल, ताकि उससे पीएनएल हमारा इम्पैक्ट ना करे, इसलिए हम जो उसका गेन या लॉस रहता है वो ओसीआई में ले जाते हैं डायरेक्टली, और वहां से वो पीएनएल में भी रिक्लासिफाई नहीं होता। जैसे हम जब भी शेयर बेचते हैं तो जो रियलाइज गेन होता है वो सीधे ओसीआई से रिटेन्ड अर्निंग्स में क्लासिफाई होता है, वो हमारे कभी पीएनएल में नहीं आता। अब क्योंकि इसके ऊपर डिफर्ड टैक्स भी बनता है, जो टैक्स इम्पैक्ट होता है इसका क्लोजिंग डेट पे, कॉस्ट, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स तो उसकी वैल्यू अलग आ रही होती है, और एज पर अकाउंटिंग इंडेस हम उसको फेयर वैल्यू पे ला चुके होते हैं, तो जो भी इसका टैक्स इम्पैक्ट होता है वो भी हम सीधे ओसीआई से क्रिएट करते हैं। नाउ एज वी नो कि हमारा जो पीएनएल है वो टू पार्ट से कंसिस्ट करता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ओसीआई। So now add of revenue from operation and other comprehensive income, we get total comprehensive income for the period. Now on basis of it, we calculate our EPS. Our EPS is of two types: EPS and diluted EPS. We calculate depreciation for discontinued operation and for the discontinued and continued both. It means for as a whole. Now here, when we show our discontinued operations, so we do not show our statement of P&L for the whole. We only show our net result of a discontinued operation. Now we will talk about the statement of change in equity. A statement of change in equity would reconcile opening to closing amount of each component of equity, including reserve and surplus and item of other comprehensive income. Also, the change in equity share capital due to prior period error and the corresponding restated opening balances of the equity share capital need to be disclosed. यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है उसे हम इसलिए बनाते हैं मेनली क्योंकि हमारा ओपनिंग रिजर्व और क्लोजिंग रिजर्व रिकंसाइल हो सके। इसमें हमारा इंक्लूड होता है रिजर्व एंड सरप्लस एंड आइटम ऑफ अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। इसमें अमेंडमेंट आया है और इसमें दो चीजों का और एडिशनल किया गया है: capital change due to prior period error and the corresponding restated opening balances of the equity। ये दो amendments अभी हमारे new add on हुए हैं, due to prior period error और restated opening balances। Now NBFC were earlier specifically required to disclose the statutory reserve as part of other equity in the statement of change in equity. The company shall continue the same practice of disclosing it separately as a other reserve. This is also an amendment कॉलम में शो किया जाता था, बट नाउ वी विल फॉलो द सेम प्रैक्टिस। हम अभी भी स्टैट्यूटरी रिजर्व को डिस्क्लोज करेंगे, बट अब वो अदर इक्विटी में शो ना होकर अदर रिजर्व में शो किया जाएगा। एडिशनली द कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अटैच्ड टू अ स्टैट्यूटरी रिजर्व have to be separately disclosed in the notes and stipulated by the relevant statute. If there is any condition attached to a statutory reserve, तो वो भी हमें separately disclose करनी पड़ेगी। Now this is the format of the statement of change in equity. It has a two part: equity share capital and other equity. Equity share capital have a 5 columns: balance at the beginning of the reporting period, change in equity share capital due to prior period error, restated balances at the beginning of the reporting period, any change during the year, and balance at the end of the reporting period. Now here we are having a format of other equity. This is the format, and see here there are the 4 columns of reserve and surplus. Earlier there were 5 columns. One of the column was of a statutory reserve. Now it has been changed, and now we will include statutory reserve and other reserve. Now we all have now understand what do we mean by Schedule 3 and Division 3, and what are its format in which the companies present their financial statement. So we will discuss about the amendments in Schedule 3 and CARO 2022. So the main purpose behind this amendment was to match the reporting framework and improve transparency. हमारा जो अमेंडमेंट्स आए उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे 2 रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, शेड्यूल 3 और कारो 2020, उन्हें हम एज पॉसिबल हम उनमें मैच करवा सके। It further enable to reduce the risk of
frauds and other unethical behavior on the part of the companies and increase transparency. Now it is effective from Ministry of Corporate Affairs has amended Schedule 3 of Companies Act 2013 on 24th March 2021. And these amendments are effective from 1st April 2021 and onwards. एमसीए ने ये अमेंडमेंट शेड्यूल 3 का डिवीजन 3 का 24 मार्च 2021 को अनाउंस किया था एंड दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम द 1st April 2021. Now we are having a brief discussion of amendments on Schedule 3. You will find these amendments similar with the Division 2 and Division 1 as these are applicable on Division 1, 2 as well as on 3. No shareholding of promoters. As compared to earlier versions, the entity shall now disclose the shares held by the promoters at the end of the financial year and percentage change during the year. Earlier, we only disclosed number of shares held by the promoter at the end of the reporting period. Now there is an amendment with the number of shares. We also have to disclose the percentage change during the year. Now next, disclosure for tangible and intangible asset. At the beginning and end of the reporting period, a reconciliation of the gross and net carrying amount of each class of asset show addition, disposal, acquisition through business combination, amount of changes due to revaluation and other adjustments like depreciation and impairment losses shall be disclosed separately if the changes 10 or more. हम हमारे tangible and intangible का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता है इन टेबुलर फॉर्म जिसमें हम रिकंसिलेशन दिखाते हैं एट द बिगनिंग से एंड तक का हमारे जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट है. अर्लियर इसमें सिर्फ 3 कॉलम्स हुआ करते थे, एडिशन, डिस्पोजल and any other adjustment, but now they have inserted 2 more columns, amount of change due to revaluation and the related depreciation and impairment loss reversal. These are the 2 columns which has been new inserted. If the change is 10% or more in each class of asset, अगर हमारा कोई भी change किसी भी एक एसेट में 10% से ज्यादा है तो हमें उस क्लास ऑफ एसेट्स के सारे एसेट्स को वापस से रिकंसाइल करना पड़ेगा. Rounding off. It is mandatory for the companies to round up the figures appearing in the balance sheet on the basis of total income. Earlier, this provision was and round up on the basis of turnover. In NBFCs, हम starting से ही round off करते हैं figures को, but earlier हम इसको round off क्या करते थे on the basis of turnover. Now it has been amended. Now we will round up the figures on the basis of total income. Now, trade payable due for payment. From now onwards, it shall be prepared for trade payables also which are due for payment in a tabular form, whether or not due date of payment is specified on the bills. After the amendments, हमें trade payables का एक tabular format prescribe किया गया है Schedule 3 Division 3 में, जिसमें हमें prescribe किया गया है कि हमें हमारे trade payables को aging schedule में show करना होगा. This is the format of the trade payable aging schedule where we will show our trade payable less than 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 year, and in total. Same is for trade receivable. So, what is trade payable? Many times we have confusion that trade payable is generally for raw material or generally for the goods we purchase. If creditors are there, they are trade payable. But trade payable is basically not only for those raw materials, they are basically all those payables which arises during the normal course of business. So normal course of business में suppose आप कोई stationery भी purchase कर रहे हो और वो उससे related vendor का कोई outstanding है, then that is also trade payable. आपके कोई administrative expenses हैं, and if you are making payment for that, that is also trade payable. So we need to actually see that whatever outstandings are there in the financial statement, is it there during the normal course of business or it is some other payable? But statutory payables are not trade payable. आपका PF का पेमेंट हो रहा है या ESI का पेमेंट हो रहा है और उसकी कोई लाइबिलिटी बुक्स के अंदर खड़ी है, so that statutory liability is not your trade payable. So this has been clarified in the guidance note also. तो जहां कहीं पे भी आप ऑडिट पे हो या जहां पे भी अपन शेड्यूल 3 के कोई इम्प्लीमेंटेशन के काम कर रहे हैं जो रिसेंट जो ये चेंजेस हैं, so there you have to see this, and thereafter they have said about the outstanding from the due date of payment. तो कई जगह पे
जैसे मान लीजिए कि 60 डेज का लिमिट है कि आप 60 डेज बाद उसको पेमेंट कर सकते हो, तो योर ड्यू डेट इज 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये जब भी आपको एजिंग करना है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर सब देने हैं और उसमें जो एजिंग देनी है, ये देना आपको फ्रॉम ड्यू डेट up to 6 months from due date, 1 to 2 year from due date, 2 to 3 year from due date, and then above 3 years from due date. तो बेसिकली क्या होगा कि आपने जो ये 4 कॉलम दिए हैं, और हो सकता है कुछ पर्टिकुलर ट्रेड पेबल्स हैं, दे आर नॉट येट ड्यू, तो अगर आपको इसको रिकंसाइल कराना है विद द बैलेंस शीट लाइन आइटम, तो आपको एक कॉलम और जोड़ना पड़ेगा, पेबल्स विच आर नॉट ड्यू, and then it will be basically reconciled with the बैलेंस शीट लाइन आइटम। और जहां कहीं पे भी ड्यू डेट नहीं प्रेस्क्राइब्ड है, देयर इट विल बी लाइक डेट ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी द ड्यू डेट। तो वहां पे और ये फिर आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू द एवरी क्रेडिटर, एवरी ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स में भी इस तरीके की डिस्क्लोजर्स हैं। So there you need to do this particular exercise. Yes. Now same is for the trade receivables. Schedule 3 Division 3 prescribes the format of the aging schedule. Now see the format. This is the format. Undisputed trade receivable considered goods. Undisputed trade receivable which have a significant increase in credit risk. And undisputed trade receivable which have been credit impaired. It means जो ट्रेड रिसीवेबल जिनसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पैसे आ जाएंगे, दीज आर कंसिडर्ड इन गुड्स व्हिच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट, जहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि मे बी हमारा बैड डेब्ट हो सकता है, दे विल कंसिडर इन सेकंड कॉलम। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल व्हिच हैव अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल व्हिच आर क्रेडिट इंपेयर्ड मींस जहां हमें 100% श्योरिटी है कि हमारा बैड डेब्ट हो चुका है। नाउ दिस इज द एजिंग लेस देन 6 months, 6 to 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, and more than 3 year. Now, willful defaulter. If there is any company declared as a willful defaulters by the bank or financial institution or any other lender, then the disclosure shall be made by the companies in the manner prescribed. It means, first of all, we will understand what do we mean by willful defaulter. Willful defaulter is the individual or an entity when they are having a net worth that they can pay off their all dues and debts, but still they are not paying off. And if any bank or financial institution declared them as a willful defaulter category, so they need to disclose them in their financial statements. There are 2 requirements they need to disclose. First is the date of declaration as a willful defaulter. जिस दिन से वो willful defaulter में आए, वो date उन्हें बताना पड़ेगा, as well as amount and nature of the default. Now, लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी एंड रिलेटेड पार्टीज। अगर कंपनी ने कोई भी लोन प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी या रिलेटेड पार्टी को दिया है, चाहे वो सेवरली दिया हो या फिर जॉइंटली किसी और के साथ दिया हो, चाहे वो रिपेबल ऑन डिमांड हो या उसका स्पेसिफिक टेन्योर स्पेसिफाई हो या कोई पीरियड ऑफ रीपेमेंट हो, इन एनी केस हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Borrowing from banks and financial institution. At balance sheet date, the company shall disclose the detail of those funds which were borrowed from the banks and financial institution for a specific purpose. अगर NBFC ने कोई भी borrowing किसी बैंक या financial institution से लिया है for a specific purpose, तो on the balance sheet date जो unutilized amount रह गया है, वो कंपनी NBFC को disclose करना पड़ेगा अपने financial statement में for a specific purpose. What do we mean by benami property? Company shall disclose all the benami properties in which proceeding have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the benami transaction. Benami property वो properties होती है जो कंपनी के नेम पर रजिस्टर्ड नहीं है, बट कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका बेनिफिट ले रही है। इन केस अगर कंपनी के पास में कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कोई भी केस चल रहा है या लीगल सूट पेंडिंग है, वो उन्हें अपने फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Title deeds of immovable property. The company have to give the details of all those immovable properties whose title deeds are not in the name of the company, except those immovable properties in which the company is the lessee and the lease agreement are executed. अगर कंपनी के पास में कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी के नेम पर नहीं है, कंपनी को वो सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट जब कंपनी ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज एग्रीमेंट में ली हो। Now, registered value. The
company shall disclose as to whether the fair value of investment property as measured for disclosure purpose in the financial statement is based on the valuation by registered valuer as defined under Rule 2 of the Companies Act. As we all know कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड फेयर वैल्यू पे मेजर करता है. नाउ दिस इज द अमेंडमेंट. हमें फेयर वैल्यू पे तो अभी भी मेजर करना है, बट नाउ वी विल रिक्वायर दैट हम जो फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर द्वारा ही हो. सेम इज फॉर पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट. हम अगर कोई भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट करते हैं आइदर फॉर पीपीई और इंटेंजिबल एसेट, तो वो रिवैल्यूएशन भी अब हमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही करवाना है और उसे डिस्क्लोज करना है. Now this is the format. Now capital WIP. Disclosure shall be made in the manner prescribed below and detail of project where activity has been suspended shall be given separately. अगर हमारा कोई भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो हमें उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है. और इफ अगर कोई ऐसा कैपिटल WIP भी है जिसकी एक्टिविटीज अभी टेम्परेली सस्पेंड कर दी गई हो, मे बी ड्यू टू नेचर ऑफ द वर्क, तो भी हमें उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना है. Now there is intangible asset under development, which there also is amendment that it will be provided now in aging schedule. Less than 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, or more than 3 year. Now registration of charge, where any charge or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period, details and reason thereof shall be provided. अगर कंपनी के पास में ऐसा कोई भी एसेट है जिसके ऊपर चार्ज या सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज होना है विद आरओसी और वो उस टाइम पीरियड में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो उसकी डिटेल्स और उसका रीजन कि वो अभी तक स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर आरओसी के पास क्यों रजिस्टर्ड नहीं है, इन दोनों का डिस्क्लोजर हमें देना पड़ता है. नाउ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी. If any company has traded or invested in cryptocurrency or virtual currency, then following disclosure shall be made in the financial statement. अगर NBFC जो है अगर वो कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करती है किसी क्रिप्टो करेंसी में, तो उन्हें ये 3 डिस्क्लोजर देने पड़ता है. Profit and loss made from cryptocurrency, amount of currency held at reporting period, and any deposit or advance taken from any person for trading or investment in crypto. Equity share capital. There are additional following disclosure are required. As we have already discussed कि equity share capitals में हमारे 2 additional column insert हुए हैं. First is change in equity share capital due to prior period error, and second is restated balances at the beginning of the current reporting period. Now here we are discussing the following ratio that we are need to disclose: capital to risk weighted asset ratio, tier 1 CRAR, tier 2 CRAR, and liquidity coverage ratio. This is a format in which we show these ratios. Now first we will understand what do we mean by capital to risk weighted asset ratio. Capital adequacy ratio is a percentage of an adequate amount to be maintained to solve the risk situation of NBFC by them, and this is described as a shield for an NBFC to engross its losses before it becomes insolvent. जो हम हमारा CRAR कैलकुलेट करते हैं वो कंपनी ये जानने के लिए कैलकुलेट करती है कि उसके पास में इतना एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए जो कि उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने से बचा सके. इट मींस जब NBFC के पास में लास्ट रिसोर्ट हो तब उसके पास में इतना कैपिटल एडुकेट होना चाहिए कि वो अपने सारे डेब्ट्स लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके. Every NBFC shall maintain a minimum capital ratio consisting of tier 1 and tier 2 capital, which shall not be less than 15% of its aggregate risk-weighted assets on balance sheet. End of risk-adjusted balance value of balance sheet item. जो भी हमारी NBFC का जो हमारा CRAR है और उसमें कैपिटल फंड जो हमारा होगा टीयर 1 और टीयर 2 का, वो 15% से ज्यादा होना चाहिए हमारे risk-weighted assets से. We will understand what do we mean by tier 1 capital, tier 2 capital, and risk-weighted assets. Now here we are having a formula of a CRAR, capital fund divided by risk-weighted assets plus off-balance sheet item. Now one by one we will understand what do we mean by capital fund, risk-weighted assets, and off-balance sheet item. So first, capital fund consists of a tier 1 and tier 2 capital. Tier 1 capital consists means own funds. Now tier 1 capital में वो कैपिटल इंक्लूड होती है जो मेनली इक्विटी को बिलोंग करती है. मींस दे आर सिक्योर्ड मनी एंड दे आर परमानेंट इन नेचर.
So we will calculate tier 1 capital by means own funds, इनमें से हम less करेंगे investment in shares of any other NBFC or share of debenture bonds, outstanding loans with our subsidiary or any company within the same group. But our tier 1 capital should not be less than 10% of our own fund. Now, tier 2 capital includes the following. First of all, tier 2 capital includes those capitals which are less temporary, which are less permanent in nature, and which comes after the equity. Now, it includes preference share capital other than those which are compulsory convertible into an equity. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स में हम उस कैपिटल को लेते हैं जो कंपलसरी कन्वर्टेबल इक्विटी नहीं होती, क्योंकि जो कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी होगी तो वो तो एज गुड एज इक्विटी होगी, so it will be considered in tier 1 capital. So preference share capital other than those which are compulsory convertible into equity. Second, revaluation reserve at discounted rate of 55%. The revaluation reserve is not a permanent in nature because हम हमारे एसेट्स को एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड फेयर वैल्यू पे मेजर करता है. इस वजह से हमारा OCI NR जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्रिएट होता है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ अमाउंट होता रहता है ड्यू टू फेयर वैल्यू चेंजेस. दैट्स व्हाई RBI हैज प्रिस्क्राइब्ड कि जो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व है हम उसे टोटल में ना लेकर जो 55% की डिस्काउंटेड रेट से उसे टियर 2 में कंसीडर करेंगे. एंड सेम इज फॉर जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व. नाउ हाइब्रिड डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स. हाइब्रिड डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें सिमिलर फीचर्स इक्विटी एंड कैपिटल दोनों के होते हैं, but because they are similar to equity, not equal to equity, that's why उन्हें हम tier 2 में consider करते हैं. Subordinate debts to the extent that aggregate does not exceed tier 1 capital. First of all, we will know what do we mean by subordinate. Subordinate debts हमारे वो debts होते हैं जब हमारे सारे debts pay off करने के बाद में if we are having a fund, so we will pay to those debts. Means they are last. Now we are having a formula of tier 1 CRAR. Tier 1 divided by risk weighted asset plus off balance sheet item. Now we have discussed what do we mean by tier 1 and tier 2 formula. Tier 2 divided by risk weighted asset plus off balance sheet item. We will understand what do we mean by risk weighted assets. So for CIR purpose, the entire asset side of the NBFC balance sheet is recalculated on the basis of assigned risk weights to each category of asset, and this follow the principle of conservatism. जो हम हमारे रिस्क एडजस्टेड एसेट्स को हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं हमारी एनबीएफसी की जो बैलेंस शीट होती है उसका जो टोटल एसेट साइड होता है उसको हम जो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो वेट असाइन है उसके थ्रू हम हमारा सीएआर कैलकुलेट करते हैं जो आरबीआई हमें प्रिस्क्राइब करता है कि फॉर ईच एसेट उसका क्या क्या वेट होगा. This follow the principle of conservatism by considering asset at their risk adjusted value rather than their face value in considering the CIR. क्योंकि जो हमारे एसेट्स होते हैं और मेनली हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटीज लोन या एडवांसेस की होती है, सो वी आर ऑलवेज हैविंग अ रिस्क कि हमारा पेमेंट है जो हमने लोन या एडवांसेस दिए वो हमें रिकवर होंगे या नहीं. इसलिए बाय फॉलोइंग द कंजर्वेटिज्म हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम हमारा CAR फेस वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करते हैं. जो आरबीआई ने हमें परसेंटेज प्रिस्क्राइब की है हम उस पर उसको वेट असाइन करके अपना रिस्क एडजस्टेड एसेट कैलकुलेट करते हैं. And same is for the off balance sheet items. As off balance sheet item also have a varying degree of risk. For example, the risk involved in guarantee given against counter guarantee of other banks is much less compared to other guarantees. Similarly, guarantees related to particular transaction are less risky compared to general transaction. Similarly, हमारे जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम होते हैं उनमें भी सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क होता है. इस वजह से हम उनमें जो एसेट्स या गारंटीज जो इंक्लूड होती है उसे भी हम आरबीआई के द्वारा जो प्रिस्क्राइब रिस्क वेटेड होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली उन्हें मेजर करते हैं. Recognizing the above, the RBI has assigned different risk weights to different categories of assets. जैसा कि मैंने बोला कि आरबीआई जो है उसने डिफरेंट रिस्क वेट्स दे रखे हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसेट के लिए. फॉर एग्जांपल, कैश बैलेंस विद आरबीआई इज असाइन्ड द रिस्क वेट ऑफ 0. एज वी ऑल नो कि कैश जो है वो हाई लिक्विडिटी एसेट होता है और उसके साथ में कोई भी रिस्क इंक्लूड नहीं होता है. That is why by RBI it has been prescribed the 0 weight, and the loan and advances have been generally assigned a risk weight of 100%. Now, how do we calculate a risk adjusted value? Risk adjusted value for any category of asset is determined by multiplying the value of the category of asset as per the balance sheet with the risk weight assigned thereto.
हम रिस्क एडजस्टेड वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना भी हमारे टोटल एसेट्स होते हैं और उन्हें जो आरबीआई ने जो परसेंटेज है रिस्क वेट असाइन किया है उनको मल्टीप्लाई करके हमारा रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ एसेट निकालते हैं. फॉर एग्जांपल, if an NBFC has a guarantee advance of 100 crore outstanding on the balance sheet date, the risk adjusted value of this advance would be 50 crores as the loan guaranteed by ECGC has been assigned a risk weight of 50. Suppose हमारे पास में एक लोन है 100 करोड़ का and RBI has prescribed its weight of 50. So 100 multiplied by 50% equals to 50. So हमारा risk adjusted asset होगा 50 करोड़ का. इट मीन्स कि भले हमारी बैलेंस शीट पे ऑन द फेस हमारे पास में लोन का एसेट दिख रहा हुआ 100 करोड़ का, बट टू पे ऑफ इन अ कैपिटल फंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी हमारे पास में हमारा लोन 50 करोड़ का इशू होगा एज पर सीएआर. These are the risk weights which have been prescribed by RBI and these are amended by time to time from RBI. Cash balance with RBI 0%. Balance in current account with banks. If cash balance, it's a 0% risk weight means there is no dilution of the value of this particular asset. And if it is in current account, then 20% is the risk weight. So that means that its value would be around 80%. Now we will understand this capital adequacy ratio with the formula. Suppose we are having a tier 1 capital 3000, tier 2 capital 1000 and are having a total asset side of the balance sheet cash 25,000, other investment 12,000, balance in current account with other bank 1500 and assume off balance sheet item is nil. Now capital adequacy ratio formula is capital fund divided by risk weighted asset plus off balance sheet item. Capital fund consists of tier 1 capital which is equals to 3000, tier 2 capital which is equals to 1000. So our total capital fund is of 4000. Now we will calculate our risk weight assets. So our total assets, cash, other investments, balance in current accounts and their risk weight as assigned by RBI 0%, 100% and 20%. We will multiply our amount with the risk weight and we will get our risk weighted assets. So our total of risk weight asset is 12,300. Now putting this in the formula of capital fund and risk weighted assets, 4,000 divided by 12,300. As we calculate our CRAR in the percentage, so multiply by 100, 32.52. We need to have our CAR at least of 15%. It is in 32.52%, which show that we are having enough capital to pay off our debts. Now we will have another formula, liquidity coverage ratio. Liquidity coverage ratio refers to a requirement whereby NBFC maintain a proportion of high quality liquid asset that is adequate to meet the net cash outflow for a period of 30 calendar days. Liquidity coverage ratio NBFC इसलिए कैलकुलेट करती है कि सपोज इन अ लिक्विडिटी क्राइसिस एनबीएफसी के पास में इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो अपने नेक्स्ट 30 डेज के नेट कैश आउटफ्लोज को पे ऑफ कर सके. उनके पास में इतने हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होने चाहिए कि जिसे हम इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश करके हमारे पे ऑफ कर सके डेब्ट्स को. This is measure that in case the market faces a liquidity crisis, then it is able to meet its short-term financial obligation. Liquidity coverage ratio we mainly calculate for the short-term financial obligation payoff. This is the formula: stock of high-quality liquid asset divided by total net cash outflow for over the next 30 days. Now we will understand what do we mean by high-quality liquid asset. High quality liquid asset refers to those assets which are free from any debts and which can be converted into cash when under a significantly severe liquidity stress scenario and helps to meet the liquidity needs for a 30 calendar days time horizon. As I explained, high quality liquid asset वो assets होते हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज क्रिएट नहीं है या किसी भी तरह का डेप्ट नहीं है और वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है. और हमारे पास में जब हमारे लिक्विडिटी स्ट्रेस सिनेरियो होंगे मींस तब हमारे पास में लिक्विड एसेट्स कन्वर्टेबल इनटू इजीली कैश हो सके और हम उसे 30 डेज के अंदर पे ऑफ कर सके. इन सिंपल टर्म्स, high quality liquid assets means liquid asset that can be used as a collateral to obtain funds in different stress scenario
or can be immediately converted into cash or readily sold at a very little or no less of value. हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट को हम कोलेटरल के तरह भी यूज कर सकते हैं कि हमें हमारे फंड्स मिल सके और साथ ही वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं और अगर हम उन्हें इन लिक्विड स्ट्रेस सिनेरियो सेल आउट भी करते हैं तो उनका वैल्यू ज्यादा लॉस नहीं होता है. टोटल नेट कैश आउटफ्लो इज द डिनोमिनेटर ऑफ द LCR. It is defined as the total expected cash outflow minus total expected cash inflow. It means it is of a net outflow less inflow. Now I will hand over the mic to Shruti for about ahead discussion. Okay, so let's step forward and have a look over the executive summary of various key components and their impacts in the working of IND AS for any NBFC. Basically, अगर हम देखेंगे तो एक NBFC का जो मेजर फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो लोन्स लेती है और लोन्स देती है. अब आप लोन्स जो उसने लिए हैं या दिए हैं उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम? So let's talk about that. Recognition of loans given या taken जो भी होते हैं हमें उसे amortized cost method पर वैल्यू करना है. अब अगर हमने लोन्स लिए हैं या दिए हैं तो कुछ इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंसेस भी होंगे. सो दैट इंटरेस्ट रेवेन्यू या एक्सपेंस ऑन दोस फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटी are to be valued on the amortized cost method and they shall be calculated using the effective interest rate which will be discussed later. Not all amortized cost method. Of course, wherever you have done, maybe that we have done the amortized cost method, but that can be the fair value through profit or loss as well as fair value through OCI. So depending on the business model of the company, sometimes loans which are being given can be disclosed as or can be recognized as fair value also. Next, if we talk about the transaction cost, so the transaction cost is to be amortized over the tenure of the loans or borrowings and need not be booked upfront by using the effective interest rate in the amortized cost method. And now, अब आपने जो भी loans लिए या दिए होंगे, so they shall be classified as direct assignment and pass-through certificate basically. अगर हम DA की बात करेंगे तो हम एक excess interest spread जो कि एक financial asset होगा वो create करेंगे. And if we talk about pass-through certificate that is PTC, तो हम re-recognize करेंगे loans को balance sheet में. एक NBFC या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी करती होगी तो जो इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स होंगे दे शुड बी कैरिड एट द फेयर वैल्यू. एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जनरली होते ही हैं. अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करेंगे तो द एक्चुअल गेन एंड लॉसेस ऑन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स दे नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. लीजेस, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द लीजेस तो हम क्या करेंगे कि लीज लायबिलिटी क्रिएट करेंगे एंड राइट ऑफ यूज एसेट क्रिएट करेंगे व्हिच विल बी बेस्ड ऑन द डिस्काउंटिंग ऑफ द कैश फ्लोज. अब सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी होती हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दे शैल बी वैल्यूड एज पर द amortized cost method जनरली. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो ट्रीटमेंट होगा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे शैल बी कैरिड फॉरवर्ड एट देयर इंडियन गैप वैल्यूज और दे कैन बी measured at fair value of the property plant and equipment as the entity deems fit. Expected credit loss which will be discussed in detail later, it should be booked as per IND AS 109 specifically which is a financial instrument. Deferred taxes, if we talk about deferred taxes तो उसके लिए specifically balance sheet approach use करी जाती है which is prescribed as per IND AS 12. Now let's go in depth and have a look over कि भाई financial instrument अगर कोई है तो financial asset का measurement कैसे होगा. IGAP में पहले क्या होता था, अब IND AS में क्या होता है वो चीज. तो IGAP में there was no specific accounting principle for financial instrument कि उसे कैसे measure करना है या क्या करना है, but IND AS इसके लिए specific है. IND AS 109 has its specific principles for financial instruments. Like financial assets are to be classified and measured as under 3 categories. First one, if we talk about is the amortized cost. तो जितने भी financial assets होते हैं except for the equity instruments, they should be measured at the amortized cost. जहाँ पर आपका business model या तो contractual cash flows को hold and collect करना है until maturity और उन्हें short term gain के लिए sell out करना नहीं है तो वहाँ पर आप amortized cost method use कर सकते हैं. Fair value through profit or loss में सारे equity instruments and other instruments जाएंगे जो कि amortized cost और other comprehensive income में हम classify नहीं कर रहे हैं.
फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो सारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जाते हैं जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है, तो एंटिटी उन्हें ओसीआई में डिजिग्नेट करने का चूज कर सकती है. Next, we talk about the transaction cost. The transaction cost that is incidental to the financial instrument. The transaction cost होती है. Transaction cost basically means the incremental cost that is directly attributable to the acquisition, issue, or disposal of a financial asset or the financial liability. Directly attributable होना is the key word. Okay. Incremental cost क्या हो गया? तो incremental cost is any cost that would not have been incurred if the entity had not acquired, issued or disposed of the financial instrument. अब वही चीज कि आई गैप में क्या होता है, इंडेस में क्या होता है. आई गैप में बेसिकली हम क्या करते थे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस एज द केस मे बी इन द पीरियड इन व्हिच द कॉस्ट इज इनकर्ड. But specifically, IND AS 109 says that the transaction cost, which is incidental to the financial instrument, needs to be adjusted as follows. अगर आप amortized cost method या fair value through other comprehensive income वाला method follow कर रहे हैं, तो transaction cost is to be included in the calculation of effective interest rate, and they are to be amortized through profit and loss account over the term of instrument. उसको amortization में लेकर के जाएंगे. बट अगर आप fair value through profit and loss वाला method follow कर रहे हैं, the transaction cost is to be recognized in P&L account immediately at the time of initial recognition. अब अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वो वाला है जो आपने एफबीटी ओसीआई पे डेजिग्नेट करे, दैट इज द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट एफबीटी ओसीआई, तो उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी होगा उसको एमोर्टाइज या रिक्लासिफाई हमें नहीं करना है पीएनएल अकाउंट में. एक रिकैप देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी इंसिडेंटल था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से उसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा. तो अगर आपने सबसे पहले से अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड वाला आप मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एसेट किस वैल्यू पर होता है, दैट विल बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. अनरियलाइज्ड गेन या लॉस है तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाला जो मेथड होता है उसमें अनरियलाइज्ड गेन या लॉस विल नॉट बी एप्लीकेबल. रियलाइज्ड गेन या लॉसेस जो भी होंगे, जो कि बहुत रेयर केसेस में होंगे, वो सारे पीएनएल अकाउंट में जाएंगे. और अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड होगा तो इंटरेस्ट हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करते हैं, पीएनएल अकाउंट में लेकर के जाएंगे. अगर आपने सेकंड मेथड फॉलो किया है, दैट इज फॉर डेट व्हिच इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर डेट, तो इनिशियल रिकॉग्निशन एसेट का आप वही फेयर वैल्यू प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर करेंगे. अनरियलाइज्ड गेन या लॉस है तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेकर के जाएंगे. रियलाइज्ड गेन या लॉस है तो पीएनएल अकाउंट में लेकर के जाएंगे. इंटरेस्ट या डिविडेंड है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से वैल्यू करते हैं पीएनएल अकाउंट में लेकर के जाएंगे. अगर एफबीटी ओसीआई इक्विटी वाला है तो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एसेट वही फेयर वैल्यू प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर होगा. अनरियलाइज्ड गेन या लॉस है तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा. रियलाइज्ड गेन या लॉस है तो रिटेन्ड एर्निंग्स में लेकर के जाएंगे. एंड इंटरेस्ट या डिविडेंड है तो डिविडेंड को पीएनएल अकाउंट में लेकर के जाएंगे. अगर एफबीटी पीएनएल वाला मेथड आपने फॉलो किया है तो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एसेट आप फेयर वैल्यू पर करोगे, देयर विल बी नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट सीधा पीएनएल में जाएगी. अनरियलाइज्ड गेन या लॉस अगर होगा तो दैट विल बी गोइंग टू पीएनएल. रियलाइज्ड गेन या लॉसेस, इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी होगा, इट विल बी गोइंग टू पीएनएल अकाउंट ओनली. Now next we talk about effective interest rate, because हमने अभी तक देखा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से वैल्यू करेंगे इंटरेस्ट को. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होती क्या है? So effective interest rate basically means the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or the receipts through the expected life of the financial asset or the financial liability, to the gross carrying amount of a financial asset or to the amortized cost of a financial liability. ठीक है. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली वो रेट है जो कि फ्यूचर कैश पेमेंट या रिसीट को उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से इक्वेट कर देती है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ में. Now, when calculating the effective interest rate, an entity shall estimate the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument, but shall not consider the expected credit losses. Calculation includes all fees and points paid or received between the parties to the contract that are an integral part of the EIR, effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discount. AS में ऐसे basically in AS में क्या होता था कि interest was booked using the coupon rate and there was no concept of effective interest rate. But IND AS में जब हम आते हैं तो IND AS में interest is booked on revised value after considering transaction cost, and that is based on the effective interest rate. अब लोन्स दिए हैं या दिए, तो पहले लोन्स दिए वाले चीज हम देखते हैं. लोन्स गिवन का क्या ट्रीटमेंट होता है. ठीक है. अकाउंटिंग गाइडेंस अंडर IGAAP, देयर वाज नो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स.
ठीक है। अकाउंटिंग गाइडेंस इन डेस में है कि सिंस लोन्स गिवन सेटिस्फाई द क्राइटेरिया लेड इन अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, तो बेसिकली जनरली हम क्या करते हैं, लोन्स गिवन को अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पर फॉलो करते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि एज पर इंड एस ट्रांजैक्शन, ठीक है, इंड एस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द P&L अकाउंट एट अपफ्रंट एंड इंस्टेड इट शुड बी रिकॉर्डेड ओवर द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू व्हिच इट बिलोंग्स। ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज करना है, इमीडिएटली P&L अकाउंट में नहीं ले करके जाना है। Loans given are to be measured at fair value as we have seen earlier कि loans given को किस वैल्यू पे मेजर करेंगे, तो fair value प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कि उसकी इंसिडेंटल होगी लोन। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो भी होगी इट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कैश फ्लो ऑफ द लोन्स एज वी हैव सीन अर्लियर। इंटरेस्ट इनकम बुक्ड इज levied on the loan amount using the EIR। अब एंड में क्या होना चाहिए कि द टोटल डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव इंटरेस्ट एंड as per Ind AS and interest as per AS that was the original schedule should be equal to the transaction cost. So, Vaibhav, will you explain this with examples? तो इधर अभी श्रुति ये बता रही थी क्योंकि एनबीएफसी का मेजर पर्पस लोन और डिपॉजिट रहता है, तो अपन अभी बेसिकली लोन्स पे फोकस कर रहे हैं। जो ये लोन्स देती है, तो अब जो लोन्स है ना वो अपने 3 क्राइटेरिया, अब लोन्स गिवन है तो अपने असेट हो गया, तो फाइनेंशियल एसेट में फॉल करेगा। फाइनेंशियल एसेट अपने 3 टाइप के होते हैं, जैसे अभी श्रुति ने बताया, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, FVTPL या FVTOCI। तो लोन्स गिवन जनरली अपने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, उसको रिपेमेंट जब तक होता रहता है, मतलब जब तक क्लोज नहीं होता तब तक अपन मेंटेन करते हैं। तो अगर अपन बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो टेस्ट देखें तो वो ACM में, मतलब अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में फॉल करता है, तो उसका अपन वैल्यूएशन ACM में करते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में करते हैं। तो जब भी उससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंटल कॉस्ट होती है ना, जैसे लोन्स के केस में प्रोसेसिंग फीस होती है एक मेजर कॉस्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई 60,000 का लोन है, उस पर 1% प्रोसेसिंग फीस अपने जाती है, तो प्रोसेसिंग फीस अपनी 600 हुई। तो अगर मैं AS के पॉइंट से देखूंगा तो मेरा लोन हो रहा होगा 60,000 पे रिकॉर्ड, और जो मेरी प्रोसेसिंग फीस है ना वो मेरी इनकम में डायरेक्टली जा रही होगी P&L में 600 की। हाउएवर अगर मैं IND AS के पॉइंट से देखूंगा तो जो मेरा नेट लोन रिकॉर्ड होगा ना असेट साइड, वो 59,400 का रिकॉर्ड होगा, और प्रोसेसिंग फीस मेरी लोन के अमाउंट से एडजस्ट होगी, और जो इनकम का वो जाएगा ना इम्पैक्ट 600 का, वो जितना टेन्योर होगा ना लोन का उसके बेसिस पे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 36 मंथ्स है तो मेरी जो 600 है वो 36 मंथ्स पे ही जाएगी अमोर्टाइज होके। तो वो जो अमोर्टाइजेशन का कंसेप्ट है वो EIR बताता है अपने की इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। वो बेसिकली क्या होती है कि अपनी जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज आएंगे अब उस लोन से, उसको अगर मैं डिस्काउंट फॉर करूंगा, अपनी प्रेजेंट डे पे लाऊंगा, तो वो मेरी लोन की वैल्यू को इक्वेट करके 0 आ जाए, मतलब बेसिकली मेरी NPV 0 हो जाए, वो होती है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अभी मैंने एडजस्ट करी 600 की, वो उसको एडजस्ट करके एक नई इंटरेस्ट निकालती है जो कि अपन IND AS के बेसिस पे बुक करते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए जो अपना AS का इंटरेस्ट आएगा और IND AS का इंटरेस्ट आएगा, उसमें IND AS का इंटरेस्ट जनरली बड़ा ही रहेगा क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अमोर्टाइजेशन भी इंक्लूड होगी। और जो भी इनका ओवर द ईयर टोटल टेन्योर पे अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा AS का इंटरेस्ट और IND AS के इंटरेस्ट का, वो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के इक्वल रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो IND AS में अमोर्टाइज हो रहा है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही हो रहा है। तो ये टोटल लोन्स का इम्पैक्ट होता है जो कि अपन उसमें देते हैं लोन्स गिवन के केस में, अगर वो AC अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं तो। So now अब लोन्स गिवन के केस में 2 केसेस हो सकते हैं। पहला प्रीपेमेंट हो सकता है और एक मॉडिफिकेशन हो सकता है कि हमने किसी को लोन दिया था और कस्टमर ने प्रीपे कर दिया। तो प्रीपेमेंट बेसिकली refers to a scenario where the client prepays the whole amount of the outstanding balance of loan before their original. See, here one important thing is that even for the purpose of computation of effective interest rate, if prepayment is expected at the time of giving loan itself, then one should estimate the cash flow based on those expected prepayments. तो जैसे NBFC की इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे व्हीकल लोन है ना, और एक व्हीकल लोन किसी ने 7 years के लिए लिया या 5 years के लिए लिया, बट होता क्या है जनरली जो भी व्हीकल लोन लेने वाला है, जो बोरोवर है, वो शुरू में तो सपोज फॉर 3 years he will make the payment of all the respective installments, जो भी उसकी 3 years में 12
3 या 36 इंस्टॉलमेंट जो है उसका वो पेमेंट करेगा। बट जो ही ये जो बोरोवर्स होते हैं उनके पास में जो ही एक इनकम अच्छी हो जाती है कभी, है ना, तो वो क्या करते हैं कि अरे यार मेरा ये लोन पड़ा है, इस लोन को मैं वापस रीपेमेंट कर देता हूँ, और वो जो भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग होता है 3 इयर्स के बाद में या 4 साल के बाद में, वो बैलेंस को वो हाथों हाथ पेमेंट कर देते हैं। सो द स्टैंडर्ड सेज कि आपको ये इस तरीके का प्रीपेमेंट भी पहले ही एक्सपेक्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू कंप्यूट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, वहां क्या होता है कि वहां पे सपोज किसी सब्जी वाले को लोन दे रखा है, या किसी ठेले वाले को लोन दे रखा है, किसी किसान को लोन दे रखा है, तो वो भी क्या करते हैं कि एक अपने सीजन के टाइम पे वो अपना ये सपोज उन्होंने कोई क्रेडिट लिया, कोई लोन लिया, और अगेन 12 इंस्टॉलमेंट्स 24 इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पेमेंट कर दी, बट उनको लगता है कि नहीं यार मेरे को थोड़ा और क्रेडिट चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि पहले वाला जो लोन है वो उसका रीपेमेंट कर दिया, और उसके बाद में देन दे कैन टेक द एनहांस क्रेडिट फ्रॉम द एनबीएफसी, और वो दूसरा लोन उनसे ले लेते हैं। तो हियर अगेन देयर इज प्रीपेमेंट ऑफ द लोन। आपका ओरिजिनल शेड्यूल ऑफ लोन वाज 5 years, but it has been paid in say after 36 months or 40 months, 45 months only. So the standard says कि expected cash flow from a particular loan क्या होगा वो आपको estimate करना है। So ऐसे केस में आपको ये भी estimate करना होता है based on the past data कि कितने लोन मेरे actual में prepayment हो जाते हैं। Accordingly EIR आपको compute करनी होगी। ये केस तो तब हो गया जब आपने पहले से estimate कर दिया prepayment कब हो रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली प्रीपेमेंट वैसे ही हो जाता है, तब तो आपको ये जो आप डिस्कस कर रहे हो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट सपोज आपने उस वक्त एस्टिमेट नहीं किया, बट बाद में किसी पर्टिकुलर बोरोवर ने आपको प्रीपेमेंट कर दिया, तो देन श्रुति विल डिस्कस दैट हाउ टू अकाउंट फॉर दैट। सर एक्सप्लेन कि प्रीपेमेंट क्या होता है जब एक कस्टमर पहले ही प्रीपे कर दे रहा है। तो इन दैट केस वेयर द लोन वेयर वी आर मेजरिंग द लोन एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, तो हम क्या करेंगे कि अनअमोर्टाइज्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी बुक की गई है उसको हम बुक करेंगे एज अ गेन और लॉस ऑन द डेट ऑफ डी रिकॉग्निशन या प्रीपेमेंट। Next, if we talk about modification, so as per paragraph 5.4.3 of IND AS 109, where the contractual cash flows of a financial asset are modified and this does not lead to derecognition of the financial asset, then the entity shall recalculate the gross carrying amount of the financial asset by doing the present value of the modified cash flows and recognize the modification gain or loss at P&L. Now, if we talk about direct assignment transaction, हमने देखा था कि लोन जो हमें दिए हैं वो क्लासिफाई कर रहे हैं एज डीए एंड पीटीसी, और डीए के केस में हम ईआईएस बुक करेंगे एज फाइनेंशियल एसेट। डीए होता क्या? Direct assignment basically is a very popular way of achieving the liquidity needs of an entity, but the motives of achieving off-balance sheet treatment accompanied by low cost of raising funds, financial sector entities enter into securitization and direct assignment transactions involving sale of their own loan portfolios. AS के accounting standards जब थे तो in idea of the basically होता क्या है कि see most of these NBFCs have their loan into the priority sectors, or many a times since banks have the requirement according to the RBI guidelines that they have to invest into the priority sector, specific priority sector. तो क्योंकि उन बैंक्स के पास में वो पोर्टफोलियो नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर वाला, तो वो एक एनबीएफसी को अप्रोच करते हैं और एनबीएफसी के पास जाके कहेंगे कि साहब आपके पास में say these are the 10,000 loans which you have invested into the priority sector. So what you can do is कि आप ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको सबको आप हमें सेल करो. So you are basically directly assign these loans to the bankers, और उसके अंदर जितने भी रिस्क एंड रिटर्न्स जो भी होंगे वो उस पर्टिकुलर बैंक के होंगे. But the company, the NBFC will act as an agency. Of course, in most of the direct assignments, some portion is also kept by the NBFC. Generally, 10% or 15%, and 85 to 90% is being sold to the
बैंकर्स। तो ऐसे केस में वो ये कह रहे हैं कि साहब दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट असाइनमेंट एंड यू नीड टू अकाउंट फॉर, और इसमें ये भी होता है कि जो पर्टिकुलर लोन जो दिया हुआ है एनबीएफसी ने, वो उसको दिया हुआ है से on 22% of rate of interest or 24% of rate of interest, but at the same time जो डायरेक्ट असाइनमेंट जो सेल आउट किया है उन्होंने सेल आउट किया है से एट द रेट ऑफ 12% और 10%। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो अपना जो बोरोवर है उससे तो एनबीएफसी रिकवर कर रही है 24% पे और पेमेंट कर रही है बैंक को 12% पे या 10% पे। तो ये 14% का जो मार्जिन है दैट इज कॉल्ड एक्सेस इंटरेस्ट। तो दिस सी विल एक्सप्लेन कि एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड का किस तरीके से काउंटिंग करना है। तो अभी हमने देखा कि डीए का मीनिंग क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि आई गैप में क्या होता था। सो इन आई गैप द लोन पोर्टफोलियो दैट हैज बीन असाइन्ड टू द बैंक वाज de-recognized in the books of accounts, treating it as a true sale, and the interest income or the excess interest spread that is the financial asset was booked as and when received. पर इंडेस में क्या होता है ना कि इन इंडेस सोल्ड पूल de-recognize कर दिया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में से, क्योंकि वो एक ट्रू सेल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। And as per paragraph 3.2.11, if in the derecognition of the financial asset, entity obtains a new financial asset, then it should recognize the same at its fair value. In case of NBFCs, what happens is that they obtain a financial asset in the form of excess interest spread, EIS, from the transaction. Therefore, it should recognize the EIS at its present value on the date of direct assignment transaction. And जो आप discounting rate use करोगे तो it should be the rate at which the NBFC considers the pattern in which the future economic benefits are consumed. जिस pattern में आपकी future economic benefits are going to be consumed, तो वो वाली आप discounting rate लेके चलेंगे। Now the entity, what will the entity do is that the entity will recognize the gain or loss whether due to consideration received or any financial asset that is obtained or financial liability that is assumed on the date of derecognition, the profit or loss account. हर relevant date पर क्या करेंगे? At every relevant date, financial income is to be booked on the unwinding of EIS asset, and consequently, actual excess interest received is to be adjusted against the EIS asset and not to be booked as interest income. मतलब आप EIS asset से adjust करोगे, interest income specific अलग से book नहीं करेंगे। ठीक है। In direct assignment transaction or assignment, मतलब in direct assignment, what happens is that the NBFC sells a certain percentage, say for example 90% of the cash flows of a loan pool. The unamortized transaction cost related to the sold 90% cash flows is to be booked as gain on the date of DA, and for the retained pool of loans 10% amortization of transaction cost will continue. Say for example एक एक्स बैंक है और उसने लोन्स दे रखे हैं कस्टमर्स को फॉर 1 लाख, और वो एक एनबीएफसी सॉरी एक एक्स एनबीएफसी है और उसने कस्टमर्स को 1 लाख के लोन दे रखे हैं। अब वो बैंक को अप्रोच करिए कि 90% वो अपने जो लोन पूल है वो सेल करेगी और 10% खुद के पास रखेगी। तो 90% अब से फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 25% के हिसाब से मिल रहा है, और मैं जो बैंक को दे रही हूँ, ठीक है, एनबीएफसी जो मैं इंटरेस्ट बैंक को दूंगी वो 10% के हिसाब से दे रही हूँ। तो जो मेरा डिफरेंस 15% है 90% पूल पर, वो एज एन ईएस क्रिएट होगा बाय प्रेजेंट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू करके हम इसका ईएस क्रिएट कर देंगे। सेकंड पार्ट हमने जो देखा था कि एक तो लोन क्लासिफाई करे थे एज डायरेक्ट असाइनमेंट और एक क्लासिफाई करे थे एज पास थ्रू सर्टिफिकेट। तो पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होता है, दैट शैल बी डिस्कस नाउ। Pass through certificate is basically a process where a pool of securities is bundled together and are given credit rating by an independent credit agency, and then are sold to investors at a fixed coupon rate. The only difference between a pass-through certificates and direct assignment is that the risk and rewards and PTC are primarily borne by the NBFC itself. डायरेक्ट असाइनमेंट के केस में क्या होता था कि अगर उसने 90% पूल अपने लोन का बैंक को सेल कर दिया तो वो खुद रिस्क बोन नहीं करती थी, ठीक है। पर पीटीसी के केस में जब हम पूल सेल कर भी रहे हैं तो भी हमारी रिस्क जो है वो एनबीएफसी की रहेगी। IGAP के हिसाब से in IGAP what we used to do was that in IGAP the loan portfolio that has been assigned to the bank was de-recognized in the books of accounts, treating it as a true sale, and interest income या excess interest spread financial asset जो था that was booked as and when received.
In Indes, क्या होता है कि sold pool is not derecognized from the books of accounts as entity retains significant risk related to the sold pool. Therefore, we have to re-recognize the loans in the books of accounts, and the working should be done as if the PTC loans are normal loans. Direct assignment के केस में क्या था कि हमने सारा पूल सोल्ड कर दिया और डीरिकॉग्नाइज कर देते थे, पर पीटीसी के केस में ऐसा नहीं है, रिस्क हमारी रहती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता था कि डीरिकॉग्नाइज कर दो सारा, इवन इफ अगर आप रिस्क खुद बोल कर रहे हैं तो भी। पर इंडेस के केस में जो हमारा पूल सोल्ड आउट है उसे हम डीरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी भी हमारे पास है, और अभी भी इन सच केस वो हमारी ट्रू सेल नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगी। इस केस में हमें जो भी लोन होगा उसे री रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में वापस से, और वर्किंग ऐसे ही की जाएगी जैसे कि पीटीसी लोन एक नॉर्मल लोन है। न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो भी होगी, न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, and any transaction cost that is linked with it should be amortized over the tenure as per amortized cost method. तो नई फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उस लोन से लिंक्ड अप है उसको हम amortized cost method के हिसाब से टेन्योर में amortize करते रहेंगे. So there will be no excess interest spread in the pass-through certificate. Here basically we will charge the interest as per the normal rate of interest from the respective, and whatever interest we have to pay to that loan liability from the bank, at that rate interest will be paid. So excess interest spread recognition will not be there as it is there in the case of direct assignment. अब जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बेसिकली एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड का वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने एक पर्टिकुलर डेट पर आपने ये जो ट्रांजैक्शन किया है उसकी वजह से यू हैव राइट ओवर दैट एक्सेस स्प्रेड, जो आपको से अगले 3 साल में उस पर्टिकुलर लोन ट्रांजैक्शन पर मिलने वाला है इंटरेस्ट, जो 24 और 12 का जो डिफरेंस है, which I was explaining. तो since you got that right to the excess spread as on the date of transaction of the direct assignment, you need to recognize as on that date. So continuing our post employment benefits, एक एंटिटी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अगर देती है तो उस पर अगर एक्चुअल गेन या लॉस हो रहा है तो हम उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? बेसिकली अकाउंटिंग अब as per AS and as per IND AS. So actuarial gain or losses in respect of the defined benefit plan, say for example gratuity, was earlier recorded as per AS in the P&L accounts itself. But under IND AS, such actuarial gain or loss form part of remeasurements. And such remeasurement gain or loss in respect of defined benefit plan is recorded in the other comprehensive income and shall never be reclassified to the income statement. Other remeasurement gain or losses in respect of other long-term employee benefits, for example, compensated absences, is recognized in the P&L account. Impact इसका ये आता है कि कंपनी को पहली बात की एक्चुअरियल वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है IND AS में हर रेलेवेंट डेट पर, एंड द एक्चुअरियल गेन और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रेच्युटी इज रिकॉर्डेड इन द OCM. तो इस तरीके से क्या होता है कि स्प्लिट हो जाता है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का स्टेटमेंट ऑफ P&L में एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में. Next, if we talk about the deferred taxes, so deferred tax का है कि for deferred taxes earlier in AS we used to have AS 22, but now in IND AS we have IND AS 12 for deferred taxes. Approach का बहुत सारे differences हैं IND AS 12 और AS 22 में deferred tax को लेकर के. पहला difference if we talk about is the approach for deferred taxes. IND AS 12 follows the balance sheet approach, temporary differences for deferred taxes, whereas AS 22 used to follow the P&L approach for timing differences. Recognition of tax in OCI या equity कैसे करेंगे उस बारे में भी बहुत difference है. तो tax on items that is recognized in OCI or directly in equity is also recorded in OCI or equity as appropriate. पर AS 22 में इस चीज को लेकर के कोई भी specific guidance नहीं है.
DTA मतलब अब आप DTA कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे या अनयूज टैक्स लॉसेस या एटसेट्रा आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो इंड एस 12 कहता है स्पेसिफिकली कि DTA is to be recognized for unused losses and tax credits to the extent that it is probable that future taxable profit will be available. मतलब आपको एस्टिमेट है कि फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट अगर अवेलेबल होगा तो आप DTA रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। पर AS 22 ऐसा नहीं कहता था। AS 22 यूज्ड टू से कि अनयूज्ड लॉसेस में अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स की तब आप रिकॉग्नाइज करोगे। डिस्क्लोजर्स की अगर हम बात करें तो इंड एस 12 के हिसाब से certain additional disclosure like the reconciliation, the details of the tax holiday and expiry of losses, unrecognized DTL, etc. are required to be disclosed. But in AS 22, there was no additional disclosure was required as such. So this is all about deferred taxes. Handing over to Vidhi now. So here regarding taxes, I would like to ask, what about the say we are recognizing the income on account of excess interest spread. So should we account for any deferred tax liability on that, or this excess interest income should be offered to tax? So what is your view, Weber? मतलब अभी जैसे एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड डायरेक्ट असाइनमेंट के उसमें फॉर्म में क्रिएट होता है तो अपनी असेट इनकम बना देता है पहली नोशनल इनकम, जो आगे वाली इनकम होने वाली है जब मेरे को रिसीव होनी थी जो मैं एस पे बुक करता। बट इंड एस में क्या होता है वो जो एक्चुअली रिसीव होने वाली थी उसको मैं डिस्काउंट फॉर करके इनिशियली गेन ऑन रिकॉग्निशन बुक करके एक EIS असेट क्रिएट कर देता हूँ। तो बहुत मतलब पॉइंट्स आए थे इस पे भी कि EIS पे टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो प्रेजेंटली अभी जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ था अभी तक तो ये था कि EIS असेट पे अपन को टैक्स नहीं देना क्योंकि अभी एज सच उस पे मतलब नोशनल गेन है तो उस पे टैक्स की बात नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से DTA DTL भी बनना नहीं चाहिए, मतलब DTL बन जाएगा क्योंकि मेरे को आगे जाके देना पड़ेगा। बट अभी करंटली टैक्स के लिए मैं ऑफर नहीं करूंगा, उसको बाद में करूंगा जब वो मेरे को रिसीव होगी एक्चुअली इंटरेस्ट, तब मैं उसको ऑफर कर दूंगा अपने टैक्स पर्पस के लिए। So basically, sole question is that whether this particular income is accrued to the NBFC or not. So as such, guidance was not available, or as such, nothing is there in the income tax law. But इसमें अगर देखें तो RBI की एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी for certain housing finance companies, and that committee has basically given certain recommendations, and wherein they have stated that this excess interest income is basically not accrued as required by the income tax law. तो इसको हमें income tax के हिसाब से टैक्स नहीं करना है। And then committee has also recommended from the point of view of section 115 JB, जहाँ पे क्योंकि ये आपकी अब इनकम हो गई है तो 115 JB में अगर आपका इनकम फॉल हो रहा तो वहां टैक्स हो जाएगा ये, until and unless there is any specific exclusion of such income. So the committee has recommended that इसका exclusion भी 115 JB में भी होना चाहिए। तो जब तक 115 JB के अंदर इस तरीके कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नहीं आता है, till then this income will be taxed under 115 JB. Of course, not under normal provision of the Income Tax Act, but under the section 115 JB, this should be taxed. So again, tax related issue comes. And apart from that, there are certain other transactions like your transaction cost. तो इनकम टैक्स में अभी तक आप क्या कर रहे थे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एज एन इनकम मान के या इन केस वेयर देयर आर बोरोइंग्स एज एन एक्सपेंस मान के you are basically charging it to the profit and loss and claiming as a deduction. But now this transaction cost is basically forming part of your effective interest rate. So a different accounting treatment is given in the financial statements. What should be the tax treatment? Should we nullify this treatment for the purpose of income tax, or what we should do? So here again, see, so far as law is concerned, it does not say anything much about this. So what view
can be taken is that whatever accounting treatment has been done in the financial statements can be taken for the purpose of tax also. So here a different approach can be taken for the purpose of, and therefore there will be no deferred tax asset or liability as such for this. So one need to examine each and every different entry, whether it has implication on deferred tax asset or liability for this purpose or not, or for the purpose of income tax, whether there is any specific, whether there is any consequence of any specific entry which has been done by done for the purpose of implementation of IND AS in the NBFCs. Yes. So can I start? Yeah. Good afternoon, everyone. So from here onward, we will be looking forward to three more points in the further slides. To start with, we have leases. So if we talk about accounting standards, that is IGAP, we have two bifurcations. First is finance lease and second is operating lease. So if we have to look at what तो जब हम फाइनेंस लीज की बात करेंगे तो फाइनेंस लीज इंसेप्शन पे जब हम उसको अकाउंट करेंगे तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द लीज पेमेंट्स पे करेंगे रिकॉग्नाइज फिर इन फ्यूचर हम उस पे फाइनेंस चार्ज ऐड करेंगे और उस लीज लाइबिलिटी का अमाउंट बढ़ जाएगा और हम जब पेमेंट करेंगे एक्चुअल तब हम लीज लाइबिलिटी का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे उसमें से और डेप्रिसिएशन की बात आती है तो हम is that there is no concept of operating a finance lease in IND AS 116. So, as per IND AS, we recognize right of use as asset corresponding to the lease liability, and the lease liability is further unwinded by the interest income and reduced by the actual payment of lease rent. So here there is no such difference if we compare it to the IGAP finance lease. And the next important thing is that in IND AS, we have two recognition exemptions. Firstly, short-term lease and low-value asset. तो अगर हमारी लीज 12 मंथ्स या उससे कम है तो हम उसे एक्सपेंस ऑफ करेंगे पीएनएल में. सेकेंडली अगर बहुत लो वैल्यू एसेट है जैसे कि टैबलेट्स हो गए या फोटोकॉपी मशीन हो गई तो हम उसे डायरेक्टली एक्सपेंस ऑफ करेंगे. So moving forward now, this slide basically displays that how we measure these liabilities. So I'm just giving it a read and then I counted using the interest rate implicit in the lease. Interest rate implicit in the lease का मतलब होगा कि अगर हम अपनी lease payments की इसके शायद आउटपुट भी सकता है.
Giving it a read and then I will elaborate. So 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 read and then I will elaborate. At the commencement date, a lessee shall measure the lease liability at the present value of lease payments that are not paid at the date. The lease payment shall be discounted using interest rate implicit in the lease. Now here, what is interest rate implicit in the lease? जब हम सारी लीज पेमेंट्स को डिस्काउंट करेंगे तब जब जो फेयर वैल्यू की इक्विवेलेंट जो रेट उन सारे पेमेंट्स को लेकर आएगी उसको बोलेंगे हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज. Or if that rate cannot be readily determined, the lessee shall use the lessee's incremental borrowing rate. Now, incremental borrowing rate वो rate होगी जब हम हमारी सारी borrowings का weighted average निकालेंगे interest का, तो उस rate को हम incremental borrowing rate मिलते हैं. अगर easily available नहीं है rate implicit in the lease, तो हम incremental borrowing rate use करेंगे. At the commencement date, the lease payments included in the measurement of lease liability comprise the following payments for the right of use for the right to use the underlying asset during the lease term that are not paid in the commencement date. So firstly, we will include fixed payments less any lease incentives receivable. हम हमारा suppose 1 lakh payment है but हमें उसके against कुछ incentive मिल रहा है तो हम उसे deduct कर देंगे. Second is variable lease payments that depend on index or rate. सपोज अगर हमारा ऐसा वेरिएबल पेमेंट है जो कि नहीं डिपेंडेंट है किसी इंडेक्स या रेट पे तो उसे हम नहीं कंसिडर करेंगे. बट अगर वेरिएबल लीज पेमेंट है सपोज वो 10% उसका एस्केलेशन क्लॉज है तो हम उसे अपनी इनिशियल कॉस्ट में रिकॉग्नाइज करेंगे. थर्ड पॉइंट स्टेट्स दैट अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल बाय द लेसी अंडर रेसिडुअल वैल्यू गारंटी. तो सपोज अगर हमारा लेसी हमें बोल रहा है कि हम लास्ट में आपको कुछ रेसिडुअल वैल्यू गारंटी देंगे ड्यू टू सपोज लेट्स से वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट, तो हम वो हमें पता है कि अगर हमें मिल रहा है तो हम वो भी इंक्लूड करेंगे. लास्ट पॉइंट सेज दैट द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन. सपोज अगर लेसी बहुत सर्टेन है कि हम परचेज ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे और हम लास्ट में वो एसेट ले लेंगे तो हमें वो अमाउंट भी इंक्लूड करना पड़ता है. So the crux of this slide is basically we have to include 4 amounts, that is fixed payments, variable lease payments and the residual value guarantee, plus if the exercise option is taken by the lessee we will also include that amount. Moving forward to next slide. Now here is the measurement of right of use asset. So corresponding to the lease liability, we will also recognize right of use asset. So how that amount is calculated, we will see in this slide. At the commencement date, a lessee shall measure the right of use asset at cost. The cost of right of use asset shall comprise. Now the right of use asset will constitute of the following amounts. Firstly, the amount of initial measurement of the lease liability. In the previous slide, we saw how we have to calculate lease liability. So firstly, we will include that amount. Secondly, अगर हमने कोई lease payment पहले दी है या उसी दिन दी है तो हम वो right of use asset में include करेंगे. Thirdly, कोई भी initial direct cost अगर lessee ने incur करी है उस asset के regarding तो हमें right of use asset में उसको include करना है. Fourth point states that an estimate of cost to be incurred by lessee in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located, or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories. For example, let's say अगर हमने कोई building दी, उसमें हमने हमारा कुछ furniture या कुछ भी furnishing करवाई, but according to the terms of the contract, हमें उसको vacate करनी है. जब हम वेकेट करेंगे तो वो एकदम वेकेंट होनी चाहिए as it was in the starting. So all the costs that will be incurred in dismantling the structures will be included in the right of use asset. I hope I've made myself clear. Moving forward, next point we have is in regard to property, plant and equipment. So as per IGAP, if we talk about fixed asset will be carried at
cost, net accumulated depreciation, and So basically, impairment. this standard leases to leases have implication in the NBFCs because see, all these NBFCs have so many rented premises. You see, NBFCs की suppose 100 branches है, तो most of them these branches are on lease only. उनका एक in general they have say 200 square feet branch, 300 square feet branch within the city or outside city at various remote places. So most of them are not owned by them, but they are on lease and say for 3 years, 5 years. तो वहां पे तो ये right of use assets and right of lease liability की जो accounting है वो होगी. But sometimes these NBFCs enter into the agreement say only for 11 months. So these are the short-term leases, and until and unless it is expected that the lease will be basically for more than 1 year, no such right of use asset or lease liability is recognized by the NBFCs. Yes. So continuing with our presentation, we were talking about property, plant and equipment. So if we talk about IGAP figures, we generally take the cost, which is net of accumulated depreciation and impairment. Now, a special note here is that if we are adopting IND AS for the first time, then as per IND AS 101 first time adoption, the first time adopter is bestowed with 2 points that he can adopt. Firstly, firstly, he can take all the PP at the IGAP figures that were present, and secondly, he can also go for fair value measurement. So impact is that the first time adopter has to decide whether he has to go for first option, that is he has to take all the IGAP values, or he or she has to take the fair value measurement. If he is taking fair value measurement, the difference will be taken to the retained earnings. So now But अगर देखा जाए तो generally जो finance business में NBFCs रहती है तो generally they have the assets like laptops or say furniture and fixtures. So these assets are there. के पास में क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे plant and machinery है या कोई दूसरे इस तरीके की machinery इस तरीके की assets नहीं है जिनका value as per IND AS और as per IGAP डिफरेंट हो इन जनरल. हो सकता है किसी पर्टिकुलर एनबीएफसी में ऐसा भी कुछ होगा कि कोई इस तरीके की चीज उनके एसेट में हो, बट इन जनरल दिस विल नॉट बी देयर. So as per IGAP or as per IND AS, you may find that since there is no difference, so whatever value which are being taken are as per IND AS only. तो ऐसे केस में आपको ये जो एग्जाम्पशंस की बात कर रहे हैं कि कैरिंग कॉस्ट को आप आगे लेके जा सकते हो, शायद उस एग्जाम्पशन की जरूरत ही नहीं पड़े. So next slide displays expected credit loss. So if we talk about what were the figures that were taken under IGAP, we used to take the provisioning norms that were as per RBI. Now coming forward to the accounting guidance under IND AS. So as per IND AS 109, we have to calculate expected credit loss for the financial assets. However, the assets, financial instruments that are measured at fair value through P&L are not subject to ECL. So what basically ECL is? ECL एक हमारा ऐसा प्रोविजन होता है जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज होते हैं, अगर वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ शॉर्टफॉल्स है, तो उसका डिफॉल्ट का जब हम प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज लेते हैं तो उसे हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बोलते हैं. तो बेसिकली एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस 2 मेथड्स में होता है. तो जो हम यहाँ पर बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं वो स्टेजेस वाला है, एंड द सेकंड इज द सिंप्लीफाइड अप्रोच व्हिच इज बेसिकली फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स. So here there are 3 stages that are there. So stage 1 assets are those assets which are not credit impaired and there is no significant increase in credit risk. So basically हम जो stage 1 financial assets होते हैं उसमें 12 month ECL basis पे calculate करते हैं interest.
Coming forward to stage 2, all exposures where there has been significant increase in the credit risk. अब significant increase in the credit risk ऐसे हो सकता है कि suppose कोई collateral था तो उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो उसकी सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो गई तो इट विल मूव टू स्टेज 2. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द स्टेज 3. स्टेज 3 वो स्टेज है जहां पर हमारा जो फाइनेंशियल एसेट है वो बिल्कुल क्रेडिट इम्पेयर्ड है. अब इन तीनों स्टेजेस में जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात देखते हैं तो स्टेज 1 और 2 कॉमन है. यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट बुक करते हैं तो हम ग्रॉस वैल्यू पे करते हैं यानी कि हम जो ईसीएल का प्रोविजन बनाते हैं वो हम डिडक्ट नहीं करते हैं और उसे हम ग्रॉस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट निकाल के और इंटरेस्ट बुक करते हैं. बट अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो जब हम अपना इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो ईसीएल का प्रोविजन होता है उसको माइनस करते हैं और फिर हम ईसीएल कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा असेट 100 रुपीज का था उस पर 20 का इम्पेयरमेंट अलाउंस था तो हम 80 पे इंटरेस्ट बुक करेंगे ना कि 100 पे. और जो हम फाइनल बैलेंसेस शो करेंगे तो जो नेट कैरिंग वैल्यू होगी ना उसमें से मतलब ग्रॉस वैल्यू में से हम इम्पेयरमेंट अलाउंस माइनस करेंगे और उसको नेट कैरिंग वैल्यू पे शो करेंगे. Expected now this slide when we first time adopt IND AS or in the future years suppose हमारा जो IRAC norms के according provisioning बनी है और जो हमारी ECL के अकॉर्डिंग बनी है एज पर IND AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो दोनों मैच नहीं करती. तो अगर हमारा ECL जो है वो IRAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बना है हमें IRAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो बनाना ही है. तो अगर हमारा ECL एज पर 109 कम है तो हम इम्पेयरमेंट रिजर्व बनाते हैं और इम्पेयरमेंट रिजर्व बनाते हैं तो उसको हम रेगुलेटरी कैपिटल में इंक्लूड नहीं कर सकते और अगर हमें वो यूज करनी है वो रिजर्व तो हमें RBI की परमिशन लेनी पड़ती है. उससे पहले हम उस रिजर्व को नहीं यूज कर सकते हैं. So this was basically that how we have to take into account both the things that is expected credit loss as per IND AS 109 plus RBI norms that is IRAC norms. So basically for the purpose of computation of expected credit loss, particularly the loans which have been given by the NBFCs, one need to gather so many informations about each and every loan कि भाई वो लोन आपने कब दिया और उस लोन में कितने डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट कितने डेज के हैं एंड व्हाट इज द कोलेटरल विद रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर लोन. सो एक पूरा आपको पैटर्न उस पर्टिकुलर लोन को देके एंड देन देयर आर सो मेनी अजम्पशंस व्हिच वन नीड टू मेक कि भाई हाँ ये मान लीजिए सिक्योरिटी उसके पास में है तो क्या ये रिकवर होगी नहीं होगी. So all these assumptions one has to make and then make a provision on each of the loan item. हर एक लोन आइटम का आपको प्रोविजन करना होगा for in your financial statements which is called expected credit loss. अभी जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया about stage 1 and stage 2, stage 1 and 2 and then stage 3. तो बेसिकली स्टेज 1 एंड 2 के ऊपर जो भी लोन है और उसमें अगर आप प्रोविजन कर रहे हो तो दे से दैट इंटरेस्ट चार्जिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डन. अगर अपन आरबीआई नॉर्म्स की बात करें तो वहां पे अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट में एक बार प्रोविजन हो गया और वो एनपीए डिक्लेयर हो गया तो उसके अंदर अपन इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते. बट हियर दे से दैट वंस यू हैव मेड द प्रोविजन तो जो भी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के अंदर जो ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट मींस विदाउट प्रोविजन, यू नीड टू अकाउंट फॉर द इनकम ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रॉस अमाउंट. बट जो स्टेज 3 एसेट्स हैं, स्टेज 3 एसेट्स के अंदर आपको फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस दैट प्रोविजन फ्रॉम द स्टेज 3 एसेट्स. तो जैसे 100 का आपका एसेट है और आपने 20 रुपीज अभी तक प्रोविजन किया हुआ है तो 80 रुपीज आप उसको लेकर के आइए फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट और जो सब्सिक्वेंट पीरियड का इंटरेस्ट है दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द 80 रुपीज नॉट ऑन द 100 रुपीज. So that is what is the difference for calculation of interest between stage 1 and 2 and stage 3 assets. So this one need to keep track for the purpose of calculating interest. So in this slide, here are some special considerations that we need to take note when we are implementing expected credit loss.
The Reserve Bank expects the Board of Directors to approve sound methodologies for computation of expected credit loss that address policies, procedures, and controls for assessing and measuring credit risk on all lending exposures commensurate with the size, complexity, and risk profile to the NBFC or ARC. The parameters and assumptions considered as well as their sensitivity to ECL output should be documented. NBFCs are advised not to make changes in the parameters, assumptions, and other aspects of their ECL model for the purpose of profit smoothing. तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम ECL का कुछ पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो फर्स्टली इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन पेपर्स कि हम ये मेथोडोलॉजी या ये बेसिस ऑफ असम्पशन वी आर कैरिंग फॉरवर्ड एंड वी विल कैरी दिस स्मूथली. पर अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां हमें लग रहा है कि हमें हमारा बेसिस चेंज करना है तो वो भी प्रॉपर कंसिडरेशन के बाद ही चेंज होना चाहिए. The rationale and justification for any change in the ECL model should be documented and approved by the board. Similarly, any adjustments to the model output should be approved by the audit committee of the board and its rationale and basis should be clearly documented. अगर उसके बाद भी हमें ये ठीक लगा या फिर कुछ जस्टिफिकेशन है प्रॉपर कि हमें हमारा ECL मॉडल चेंज करना चाहिए तो वो फर्स्टली इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, सेकेंडली इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड. सिमिलरली अगर ये ऑडिट कमिटी के द्वारा भी अप्रूव होना चाहिए. So here is a template that how if RBI wants to see expected credit loss in the financial statements, this is the template or disclosure that we have to present to the RBI. So if we talk about the horizontal line items, firstly we have performing assets which are standard, and then we will show the total of standard asset. Non-performing assets, there are three categories. First is substandard. Doubtful is further classified into three more categories. That is 1 to 3 years, more than 3 years, and subtotal for doubtful. And then the loss assets subtotal for NPA. और उसके अलावा next line item में अगर और कुछ भी guarantees etc. या loan commitments है तो हम वो भी show करेंगे. Now talking about the vertical setup, तो first second column में हमें ये बताना है कि वो कौन सी stage में fall कर रहा है. Be it stage 1, 2 or 3. Next line item shows gross carrying amount as per IND AS. यहाँ हम जो भी value हमारी as per IND AS सारी वो show करेंगे. In the next line item, we will show the loss allowance, that is ECL we are calculating that under IND AS 109. And the next column is the difference of the gross carrying amount as per IND AS minus the loss allowance which we have created. And the last second column shows what is the provisioning as per RBI norms. And the last column shows what is the actual difference that we are taking between the loss allowance that is created as per IND AS 109 and the provisioning as per IRAC norms. So that was from our side. Thank you. Thank you, Vidhi, Shruti and Raghvi for your presentations. लाइव अरे इसमें नहीं हो गया. So before we start the